Hello everyone. We are going to discuss second part of our chapter 10 perform ये जो hypothesis testing का chapter 10 है, it is based on basically we define null hypothesis, then the alternate hypothesis. In the previous tutorial we have discussed about how to calculate these errors. Now in this tutorial what I am going to focus on are two things. One is number one, we talk about z-test, and then I will talk about t-test. Basically z and t-test are almost same, with the difference that z-test is performed on z-test is performed when you have sigma known of the population, and when sigma is unknown you can perform t-test. So what I am saying is following. If in the question you are given with, let's suppose if in the question you are given with the sample size, let's say आपको sample size जो given है, that sample size is n is equal to greater or equal to 30, then it is guaranteed that the test you are going to perform is a z-test, and it is also true for chapter 6, 8. This is true for 6, 8, 9 and 10 as well. So whenever you have not 6, because in 6 we were not considering samples, so it is true for chapter 8, 9 and 10. So if you are confused कि z distribution का question है, ठीक है, what you need to consider is if the sample size. The first thing is sample size. If the sample size is greater or equal to 30, it is guaranteed that this question is from a z distribution. तो हम जो test perform करेंगे hypothesis के लिए वो z test है. I will explain in a moment what z test is, but at this point in the question look for sample size. If it is equal or greater than 30, do this. But let's say if your sample size is not 30, less than 30, then it doesn't mean you can perform z-test. You can still, but then there are two possibilities, right? 30 होगा तो confirm z, less than 30 हो, अगर तो जो standard deviation है, if the standard deviation is given sigma, which is standard deviation of population, right? अगर तो population की standard deviation given है, then you will perform z-test. Okay, and what happens if the जो standard deviation है वो s हो, s means standard deviation of sample. Instead कि अगर आपको जो standard deviation given है वो sample की है, then the test you will perform will be t-test, and in both cases the steps are same steps. The only difference is in this case, in z case, you will look for z table. आप z distribution use करोगे, and in this case the equation remains the same, and we will see in a moment. But in this case what you will do is you will look for t table. So this is how you will decide whether this is a question from z or question from t. So this is how you are gonna decide ये t test का question है or it is z test. So let me explain z test first. इसके 3 cases हम देखते हैं, and same 3 cases are for t test. So if you are already familiar with these and you are solving exercise questions already with quite ease, this video tutorial is not for you. Skip the video, and I am making a video on p-test. Go watch that. If you don't need that, then try
practicing a bit more challenging questions, because in the final exam you are going to see here and there some conceptual challenging questions. So try to solve those. If you need more sample questions, please don't hesitate to reach me. I can share with you. So let's start with z-test. So what is z-test? So in order to understand z-test, we need to go back to chapter 9 about confidence intervals. And if you remember, in chapter 9 we had an equation like this of confidence interval, जहाँ पे हम estimation कर रहे थे. It was like this. So we were estimating mean mu, हम जो estimate कर रहे थे, and our estimate was between lower and upper value of x bar, and the upper value was like x bar plus sigma over n sample size. And then here I will have z alpha by 2, y alpha by 2 I will explain in a moment. And the lower limit was x bar minus, same thing with the minus sign, sigma divided by n sample size. And once again I will have z alpha by 2, y alpha by 2. Hang on for a second, I'm gonna explain it. And it is equal to 1 minus alpha. And this we were calling confidence interval, right? ये जो probability के अंदर है, we were calling this confidence interval. So we were estimating some average of population, and that population were saying कि एक lower limit है और एक upper limit है इसके बीच में. And this 1 minus alpha we were calling that degree of confidence or confidence level. Yeah, confidence level. And this is confidence level, and what alpha is called is significance level. 1 minus alpha is confidence, and only alpha is significance level. Alright, very nice. So what it has to do with z-test. So z-test basically null hypothesis को test करने के लिए किया जाता है, whether null hypothesis को we are going to reject or accept. So let me explain this with 3 cases. So case number 1 is we are going to copy and paste this whole equation. Let me copy it. Okay, so I'm gonna copy paste this. So if what this equation says basically following, तो मैं इसको ग्राफ से एक्सप्लेन करता हूँ. तो let me plot it like this. So this is my z-axis, and I have a curve. I have a z distribution curve. This is z distribution curve. So if you remember chapter 9, if we were having some confidence interval plots like this. अगर नहीं याद तो go back and see that. तो इसके अंदर ये जो areas हैं, these lies in the critical region. ये confidence interval से बाहर है. तो ये जो इसके अंदर है, this region is in the confidence interval. ये जो हम बना रहे हैं, this shows the confidence interval. और इस confidence interval का जो area है वो 1 minus alpha है. total area alpha होना चाहिए. तो ये फिर red वाला area जो है, this should be alpha by 2, and this should also be alpha by 2. तो total area इस curve के अंदर 1 हो जाएगा. Alright, अब ये जो मैंने the orange area which I have plotted is the region where we will, जहाँ पे हम एक्सेप्ट करेंगे null hypothesis. So null hypothesis true, H0 true. तो ये H, let me like this, do not reject. So we will call
do not reject H0। तो इस रीजन के अंदर अगर z की वैल्यू हो विच मीन्स कॉन्फिडेंस इंटरवल के अंदर, तो हम नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करेंगे। अगर ये रेड वाले रीजन के अंदर होगी तो हम रिजेक्ट करेंगे नल हाइपोथेसिस को। सो दिस इज हाउ इंटरवल एस्टिमेशन एंड हाइपोथेसिस टेस्टिंग आर रिलेटेड। तो सादा लफ्ज़ों में ये है कि हम if we are estimating some average of the population mu और हमें कॉन्फिडेंस इंटरवल का अगर पता हो, तो उस कॉन्फिडेंस इंटरवल के अंदर अगर सैंपल की वैल्यू आएगी तो हम हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करेंगे, और उससे बाहर आएगी तो हम हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करेंगे। एंड these particular points, these are called critical points. So this is minus z alpha by 2 है, ये plus z alpha by 2 है। तो it will be more clear in a moment जब हम question करेंगे। तो if you are confused, that may be fine at this point, but once we solve question you will see you will be more comfortable with that। तो इसको जब ये जो इक्वेशन नंबर 1 है, डबल साइडेड इंटरवल है, दिस इज कॉल्ड टू टेल टेस्ट। तो ये टू टेल है बिकॉज इफ यू सी जो डिस्ट्रीब्यूशन बन रही है इट हैज टू टेल्स, टू रेक्टेंगल्स। राइट नाउ वन टेल की बात करते हैं। लेट्स टॉक फर्स्ट लेफ्ट टेल टेस्ट। अगर लेफ्ट टेल, और ये भी मैं क्वेश्चंस में एक्सप्लेन करूंगा कि लेफ्ट टेल कब होगी, राइट टेल कब होगी, अभी सिर्फ देख लें इसको ना। तो लेफ्ट टेल टेस्ट, let me explain what left tail test is once again from a graph। तो अगर मैं left tail का ग्राफ बनाऊं तो it will look like, once again I will plot z and then the distribution, z distribution, it looks like this। And then because it's a left tail we only have critical region on left, तो हमारे पास अब सिर्फ लेफ्ट पे होगा, राइट पे नहीं होगा क्रिटिकल रीजन। तो ये वो रीजन है, रिमेंबर, जहाँ पे हम रिजेक्ट कर रहे हैं नल हाइपोथेसिस को। तो यहाँ पे हम रिजेक्ट करेंगे H0 को। और इस बिकॉज कॉन्फिडेंस इंटरवल का एरिया इफ यू सी वो 1 माइनस अल्फा ही रहना है, तो ये 1 माइनस अल्फा है। तो व्हाट डू यू थिंक रेड रीजन का क्या होना चाहिए इन ऑर्डर टोटल एरिया टू बी 1? ये अल्फा होना चाहिए। तो यहाँ पे इस अगर सैंपल यहाँ पे आएगा इस रीजन के अंदर, कॉन्फिडेंस इंटरवल के अंदर, तो हम क्या करेंगे, वी डू नॉट रिजेक्ट। तो डू नॉट रिजेक्ट H0। एंड इफ यू सी यहाँ पे सिर्फ एक क्रिटिकल पॉइंट होगा, तो ये पॉइंट होगा z माइनस z अल्फा, नॉट अल्फा बाय 2, बिकॉज अब एक टेल है ना। तो z टेस्ट ये है, ऊपर वाले केस में ये था कि अगर सैंपल की वैल्यू इस कॉन्फिडेंस इंटरवल के अंदर नहीं आती बल्कि बाहर जाती है, तो तो हम रिजेक्ट करेंगे, और कॉन्फिडेंस इंटरवल के अंदर आती है तो एक्सेप्ट करेंगे। अब लेफ्ट टेल टेस्ट में क्या होगा, तो लेफ्ट टेल टेस्ट में ये होगा कि जो हम सैंपल से z की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, लेट्स कॉल इट z सैंपल, अगर तो वो वैल्यू यहाँ पे आए इस रीजन में, ठीक है, यहाँ पे मतलब ये कि वो बड़ी होगी इस क्रिटिकल वैल्यू से माइनस z अल्फा से, तो हम क्या करेंगे, हम तो हमारा डिसीजन ये होगा डू नॉट रिजेक्ट। क्यों नहीं रिजेक्ट कर रहे, डू नॉट रिजेक्ट H0, बिकॉज जो सैंपल से z की वैल्यू आ रही है वो इस रीजन में आ रही है, कॉन्फिडेंस इंटरवल के अंदर, जहाँ पे हाइपोथेसिस को हम एक्सेप्ट कर रहे हैं। सिमिलरली वंस अगेन आई एम सेइंग, जब हम क्वेश्चन करेंगे तो यू विल सी कि ये आइडियाज दे विल बी मोर क्लियर। राइट टेल टेस्ट क्या होगा, यू कैन इमेजिन नाउ कि मैं अगर वंस अगेन z डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट करता हूँ राइट टेल के लिए,
तो this will look like the same. Alright, only this time because it's a right tail test and we will see in questions कि right tail test किस कब होगा, तो इसकी सिर्फ एक टेल होगी, एक critical region होगा. जैसे हम इसके पीछे इस error calculate कर रहे थे, so you remember कि two sided hypothesis, one sided, left sided, right sided, तो ये exactly वो है. अब जो इस रीजन का एरिया है ये तो नहीं चेंज हो सकता बिकॉज ये इंटरवल का एरिया इस इक्वेशन का, तो इट्स रिमेन द सेम 1 माइनस अल्फा. तो क्रिटिकल रीजन अल्फा हो जाएगा एंड दिस टाइम द क्रिटिकल पॉइंट इज सी अल्फा. ठीक है, बिकॉज टोटल एरिया अल्फा होना चाहिए. तो अब जी टेस्ट क्या होगा? जी टेस्ट ये होगा कि जो सैंपल से हम जी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, अगर तो वो क्रिटिकल रीजन से पीछे आए, यानी ये इंटरवल एस्टिमेशन, ये क्रिटिकल रीजन है इससे छोटी हो और ये इंटरवल में आए, किससे छोटी हो? क्रिटिकल वैल्यूज, तो फिर हम कहेंगे टू डू नॉट रिजेक्ट, अदरवाइज रिजेक्ट करेंगे. डू नॉट रिजेक्ट H0. ठीक है, तो समरी इज के हम we are going to perform Z test and the Z test is performed in three different ways. एक टू टेल टेस्ट होगा, ये तब होगा जब अल्टरनेट हाइपोथेसिस में इक्वल नॉट इक्वल आएगा, हम देखेंगे अभी. लेफ्ट टेल में जब अल्टरनेट हाइपोथेसिस लेस देन होगा और राइट टेल में जब अल्टरनेट हाइपोथेसिस में ग्रेटर देन होगा. तो इन rather than memorizing these three equations, I would strongly recommend कि आप ये ग्राफ बना के समझो. तो I will solve this question each type. I will solve one example from each type of question. और मैं उसमें बताऊंगा कि आपको equations याद रखने की ज़रूरत नहीं है. ये confuse. You don't need to memorize this. You only need to understand this block. तो कंफ्यूज नहीं होना, जस्ट अगर आप प्लॉट समझ सकते हो तो यू विल बी एबल टू डू क्वेश्चंस विदाउट मेमोराइजिंग द इक्वेशंस. सो आई एनकरेज यू टू अंडरस्टैंड इट रादर देन मेमोराइज. तो in order to do Z टेस्ट आप ये 6 स्टेप्स करोगे. ठीक है, यू विल परफॉर्म these 6 स्टेप्स ऑलवेज. आप सबसे पहले यू विल राइट null hypothesis every time it is written, like for example mu is equal to 20. ठीक है, सेकेंड स्टेप ये होगा कि आपने अल्टरनेट हाइपोथेसिस लिखना होगा H1. जैसे कि ये हो सकता है mu is equal mu, ये हो सकता है mu लेस देन 20 हो सकता है, mu ग्रेटर देन 20 हो सकता है और mu नॉट इक्वल टू 20 हो सकता है. तो अगर लेस देन 20 होगा तो हम लगाएंगे लेफ्ट टेल. ठीक है, ग्रेटर देन 20 होगा तो राइट टेल टेस्ट लगेगा और नॉट इक्वल टू होगा तो टू टेल टेस्ट हम लगाएंगे. और सो फर्स्ट नल हाइपोथेसिस, सेकंड राइट अल्टरनेट, थर्ड स्टेप इज सिग्निफिकेंस लेवल आपको लिखना है. अल्फा, अल्फा जो है वो सिग्निफिकेंस लेवल है. सिग्निफिकेंस लेवल, आई जस्ट वार्न यू कि बाज दफ़ा ना कॉन्फिडेंस लेवल सी गिवन होता है 1 माइनस अल्फा. ठीक है, तो यहाँ से आपने फिर अल्फा निकाल लेना है. सिग्निफिकेंस लेवल सी स्टैंड फॉर कॉन्फिडेंस लेवल. एंड देन फोर्थ स्टेप ये है कि आपको क्रिटिकल वैल्यूज निकालनी है. तो दीज क्रिटिकल वैल्यूज फॉर टू टेल टेस्ट, there will be two values z plus alpha by 2. टू टेल के लिए अभी अगर आप देखो तो ये टू टेल में दो वैल्यूज थी माइनस प्लस. लेफ्ट टेल में अगर ये देखो तो सिर्फ माइनस की वैल्यू थी. लेफ्ट टेल में एक वैल्यूज माइनस अल्फा और राइट टेल में प्लस अल्फा. तो ये आई वुड राइट लाइक दिस. दिस इज फॉर टू टेल
this is for left tail and this is for right tail. तो हम हर टाइप का एक क्वेश्चन कर लेते हैं. And the fifth step is आप z sample कैलकुलेट करोगे. z की वैल्यू कैलकुलेट करोगे सैम्पल से, which will be given like, alright, x bar minus mu divided by sigma और नीचे होगा सैम्पल साइज. इस तरह से आपने कंपेयर सैम्पल से आपने z की वैल्यू फाइंड कर लेनी है. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, the important step is you will compare zs with critical values. ठीक है, z alpha by 2 प्लस माइनस अगर टू टेल टेस्ट है तो आपने देखना है कि z की वैल्यू कहाँ पे आ रही है, कॉन्फिडेंस इंटरवल में आ रही है या कॉन्फिडेंस इंटरवल के बाहर आ रही है. सो दिस इज हाउ यू विल प्रोसीड. Now let's solve some questions. Okay, if you know already this stuff, you don't need to watch the tutorial. As I said, try to solve some such challenging questions, but if you have some difficulties, तो ये बहुत standard से steps हैं. In almost all these questions you will perform these, right? तो सबसे पहले try to read the question. Step 1 है what you will do is, मैं लिख लेता हूँ. Step 1 null hypothesis लिखना है. Step 2 आपने alternate hypothesis लिखना है, H1. And in step 3 you will find level of significance alpha. Or before going further, let's complete these steps. तो H0 क्या है? Read the question. I have already read it. A random sample of 64 bags white cheddar paper weighed on average this and standard deviation this. So let's write the data as we go along. A random sample of n, so n जो है वो 64 है. So you can see n is greater or equal to 30. So z का question है, or we already know. और now ये sample का sentence चल रहा है. तो एवरेज जो गिवन है वो सैंपल की है. सी तो x, let me write x bar, it is given 5.23. then what else we are given with, हमें standard deviation given है sample. Alright, a standard deviation is what? Okay, a standard deviation of now see, this is because what I was thinking, this is s and actually this is s because the sample की standard deviation 0.24, but because the sample size is too large and is greater or equal to 30, I can safely assume with ये sigma लिख सकता हूँ. Now you can see कि n बड़ा हो तो s को मैंने sigma लिख लिया so that I can solve this using t distribution, sorry, z distribution. So sample का size if greater than 30, there is no problem कि आप z use कर लो. Okay, now let's write null hypothesis. The test the hypothesis ये देखें equal आ रहा है इसमें. तो equal वाला हमने पढ़ा हुआ है in our last tutorial. ये null hypothesis होगा. And what's the alternate hypothesis? वो less than है. तो less than है 5.5. So what do you think, what sort of a test we will need? Yes, left tail test. So we will perform left tail. It reflects the left tail. So I would suggest all of you to, after writing alternate hypothesis, ये वाली figure लाजमी बनाए सारे. It's not mandatory, but अगर आप ये plot बनाओगे तो it will be easier to solve the question and there will be less chances कि आप mistake commit करो. तो I would strongly suggest कि आप
ये जी डिस्ट्रीब्यूशन की कर्व बना के सॉल्व करो टेस्ट वाले क्वेश्चन. Alright, because it's the left tail test, so we will have tail somewhere here. और ये जो एरिया होगा this will be the left tail. और ये इसका जो एरिया है वो अल्फा होगा. और जो क्रिटिकल पॉइंट है we knew that this is minus the alpha, not alpha by 2 because single tail है. तो इसका जो अंदर एरिया है 1 minus alpha है. And just to remind ourselves, यहाँ पे null hypothesis true है. H0 true, मतलब हम H0 को reject नहीं करेंगे. तो rather than writing H0 true, let me write do not reject. Do not reject H0. तो यहाँ पे हम reject नहीं करेंगे. अब यहाँ पे का क्या मतलब है? तो फर्स्ट लेट्स ये डायग्राम कंप्लीट होगी. आई एम सेइंग सबको कि ये ट्राई टू मेक दिस डायग्राम क्वेश्चन. तो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 0.05 है. तो ये जो एरिया होगा दिस विल बी 0.05 द राइट एरिया. नाउ दिस फोर्थ स्टेप इज एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट वन जहाँ पे आप मिस्टेक कमिट कर सकते हो वो है क्रिटिकल पॉइंट्स. तो इसमें एक है माइनस जी अल्फा. माइनस जी अल्फा मुझे चाहिए, राइट. एंड हाउ कैन आई फाइंड दैट? अल्फा ऑलरेडी मुझे पता है माइनस सी 0.05. अब आपने एफ टेबल में सॉरी इस एफ के टेबल में जाना है. तो यू नो दैट कि यहाँ पे एफ की वैल्यूज गिवन होती हैं. सॉरी एफ व्हाट आई एम सेइंग जी टेबल. So z values are given here and here. और आपने यहाँ पे 0.05 ढूंढना है आपको और उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो z की वैल्यू है वो लिख लेनी है. एंड दैट z वैल्यू इज 0.05 के जो कॉरस्पॉन्डिंग z वैल्यू है. आई नो दैट दिस इज नेगेटिव. अगर ये पॉजिटिव आ रही हो तो इट मीन्स आपने टेबल सही से नहीं देखा. एंड दिस वैल्यू इज माइनस 1.64. तो जैसे ये क्रिटिकल वैल्यू आए आप यहाँ पे लिख लो. So this is, if you follow this procedure, I hope so कि फिर mistake नहीं होगी. माइनस 1.64. तो let me erase ताकि मैं ना कैसे लिख सकूँ. तो ये जो है ना ये वैल्यू माइनस 1.64 है ये वाली, ठीक है. यहाँ पे मैंने क्रिटिकल वैल्यू लिख ली. फिफ्थ स्टेप ये है कि आपने जी सैंपल कैलकुलेट करना है. जी सैंपल मतलब जी की वैल्यू सैंपल से. So for that what I need is x bar minus mu divided by sigma or sample size. I need all this, right? And I am given with 5.23 और जो mu है वो minus 5.5 and then I have sigma. Sigma is 0.24. Sigma is 0.24 and finally I have sample size of 64. So n is 64. After calculating this value you will see the value you will have is minus 5. And the last step and the most important one जहाँ पे आप decision करोगे compare करना है. Compare ZS and Z alpha. क्या compare करना है? अब ये Z axis है and this is precisely the point मैं ये कह रहा हूँ कि आपको Z test याद नहीं करना, right? आप अब देखो बस कि इस ग्राफ से आप डिसाइड कर सकते हो आप हाइपोथेसिस क्या रिजेक्ट करोगे या एक्सेप्ट करोगे. तो देखो ZS कहाँ पे है -9. तो ये तो ज़ीरो होगा यहाँ पे. तो यहाँ पे Z पॉजिटिव है यहाँ पे Z नेगेटिव है. तो यहाँ पे Z की वैल्यू है -1.69. यहाँ पे कहीं पे होगा Z -9. तो आपका सैंपल कहाँ पे आ रहा है? सैंपल इज लाइंग इन क्रिटिकल रीजन जहाँ पे आप क्या करते हो हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करते हो. तो व्हाट डू यू थिंक व्हाट कंक्लूजन शुड मेड?
Yes, so we are going to reject H0 because जो -9 है वो इस वजह से ZS इस लेफ्ट टेल टेस्ट में -Z अल्फा आ रहा है, तो फिर हम रिजेक्ट करेंगे। ठीक, ये कंडीशन अगर ट्रू है तो इसलिए मैं कह रहा हूँ इक्वेशन याद करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट सी कि आपने जो सैंपल से Z कैलकुलेट किया वो रेड रीजन में आ रहा है या नहीं। अगर रेड रीजन में आ रहा है रिजेक्ट कर दो, अगर ऑरेंज में आ रहा है एक्सेप्ट वाले में तो एक्सेप्ट कर लो। सो वी आर गोइंग टू फॉलो दीज 6 स्टेप्स इन एवरी क्वेश्चन। तो लेफ्ट टेल टेस्ट हो गया, लेट्स सी वन एग्जांपल ऑफ राइट टेल टेस्ट। So pause the video, try to solve yourself as we always do. If you can't, then let's solve it together. तो हम डाटा रीड करके ना डाटा लिखना शुरू कर देते हैं। तो मैं यहाँ से रीड करता हूँ पहले। Past experience has indicated that the standard deviation is 2f. आप शुरू से भी पढ़ सकते हो, तो मैं I'm just writing the data. तो sigma 2 Fahrenheit है। The water temperature is measured on 9 randomly chosen sample. तो अगर आप देखो कि हम जो सैंपल चूज कर रहे हैं वो 9 है, तो 9 इज स्मॉल लेस देन 30, बट बिकॉज सिग्मा जो है वो सैंपल का गिवन नहीं है, वो शुरू में गिवन है यहाँ पे इस सेंटेंस के अंदर। यहाँ से मैंने सिग्मा लिया है which don't talk about सैंपल, तो दैट्स व्हाई ये सिग्मा है। सिग्मा गिवन है तो Z टेस्ट होगा। एंड फाइनली एवरेज गिवन है and the average temperature is 98 Fahrenheit. So in all this question I gathered this data. अगर मैंने ये data ले लिया है तो let me put it somewhere here. Okay. Now let's follow the steps we learned. Step 1, write null hypothesis H0. Now what is H0? So first line, if you read the first line, the mean water temperature downstream, यहाँ पे ये hypothesis की line है, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो read it carefully. The mean water temperature downstream from a power plant cooling tower discharge pipe should be no more than 100 Fahrenheit. So this is the claim, should be. The mean है, average है, should be no more than 100. No more than 100 मतलब less or equal to 100. बट हमें पता है कि नल हाइपोथेसिस में सिर्फ इक्वल नाम लेते हैं, तो फिर मैं लेस देन की बजाय इक्वल लिख लूँगा। बट रिमेंबर ये लेस देन भी है, मतलब ये कि ना नल हाइपोथेसिस लेस देन 100 के लिए भी ट्रू है। ओके, लिखा हमने ऑल्दो इक्वल है, बट ये लेस देन 100 के लिए भी, अगर हम सैंपल से एवरेज निकालें और लेस देन 100 आए तो हम एक्सेप्ट करेंगे, इसका ये मतलब है। अच्छा, नाउ अल्टरनेट हाइपोथेसिस, अगर ये 100 और इससे लेस के लिए H0 है तो अल्टरनेट में फिर हम ये लेंगे म्यू ग्रेटर देन 100। नाउ इट इज ग्रेटर देन 100, तो कौन सा ये टेस्ट होगा? प्रिसाइसली दिस इज राइट टेल टेस्ट। So this is right tail. So what right tail test is, as I said, जब सेकंड स्टेप करो आप तो ये Z distribution बना लो so that you don't commit unnecessary errors. तो it is not mandatory but I highly encourage कि आप Z, T और P टेस्ट में ये फिगर लाजमी बनाओ, and there is less chance. राइट टेल है तो राइट साइड पे we will have critical region, तो यहाँ पे हम रिजेक्ट करेंगे। तो जो क्रिटिकल पॉइंट होगा दिस टाइम पॉजिटिव जी अल्फा होगा, नॉट अल्फा बाय 2। जस्ट टू रिमाइंड यू, ये एरिया 1 माइनस अल्फा है और ये वाला एरिया जहाँ पे रिजेक्ट करेंगे अल्फा है, तो रेड वाले रीजन में हम रिजेक्ट करेंगे अगर सैंपल आया तो।
रिजेक्ट H0, जस्ट टू रिमाइंड आवरसेल्व्स। और जो x एक्सिस पे ये z की वैल्यूज हम ले रहे हैं, ये क्रिटिकल पॉइंट है z अल्फा। नाउ द थर्ड स्टेप इज अल्फा, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। ये अल्फा गिवन है, राइट, यहाँ पे अल्फा लिखा हुआ था, तो 0.05 अल्फा आ गया। फोर्थ स्टेप इज आप, एंड इम्पोर्टेंट वन इज आप z क्रिटिकल निकालोगे, विच मीन्स z अल्फा कैलकुलेट करना है हमने, तो विच मीन्स z 0.05। अब मैंने जब when I was checking the quiz, some of you have made a mistake. आप ये 0.05 देख के z की वैल्यू नहीं लिखनी, बिकॉज रिमेंबर z हमें z का टेबल हमें एरिया टू द लेफ्ट देता है, तो मुझे ये वाला ऑरेंज वाला एरिया चाहिए इन ऑर्डर टू कैलकुलेट दिस z। ये वाला राइट वाला नहीं चाहिए, ये वाला लेफ्ट वाला चाहिए। तो व्हाट this orange area is, so from our previous knowledge we know that ये 1 minus alpha है, alpha जो है 0.05 है, तो orange area जो है 0.95, तो 0.95। अब आपने टेबल पे 0.95 देखना है, जी के टेबल पे, जी का टेबल ओपन करना है, ये जी है, तो आपने ढूंढना है 0.9, सॉरी आपने जी वैल्यू ढूंढनी है, तो एरिया ढूंढना है 0.95। यहाँ पे कहीं पे 0.95 एरिया होगा और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो वैल्यू होगी z की वो उठा लेनी है, एंड दैट वैल्यू आई हैव कैलकुलेटेड इट 1.65। तो जो क्रिटिकल वैल्यू आई है z अल्फा, दिस इज 1.65। ओके, let's do it more fast. Now we are familiar with this. Next step, z sample कैलकुलेट करेंगे सैंपल से, ऑफ कोर्स x बार माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा, और इसको नीचे डिवाइड करना है सैंपल साइज स्क्वायर रूट ऑफ n। तो x बार अगर आप देखो, आई हैव x बार 98, and then I have what is mu is 100, and sigma is 2 Fahrenheit, यहाँ पे भी given है, and divided by, and the sample size we had was 9। तो आप ये सारी वैल्यूज कैलकुलेट करो तो आंसर आता है -3। तो यहाँ पे ये 0 है, लेफ्ट साइड पे z नेगेटिव है, राइट, तो z -3 कहाँ पे होगा, यहाँ पे कहीं पे होगा ना, यहाँ पे कहीं पे इस लाइन पे। तो ये पॉइंट कहाँ पे आ रहा है, ये सी, ये पॉइंट आ रहा है जहाँ पे हम एक्सेप्ट कर रहे हैं नल हाइपोथेसिस को, जो इंटरवल कॉन्फिडेंस इंटरवल है उसके अंदर आ रहा है। तो our conclusion will be except do not, we will write do not do not reject H0, because जो रीजन सादा सी है कि जी एस जो है राइट टेल टेस्ट है, इट इज लेस देन जी अल्फा, तो इसकी वजह से हम रिजेक्ट नहीं कर रहे। तो सी रादर देन मेमोराइजिंग द इक्वेशन, अगर आपको ग्राफ याद हो तो आप आराम से कर सकते हो। The last question for Z is two-tailed test. Okay. So let's do it more quickly. मैं यहाँ से read करता हूँ. A random sample of n is equal to 15, and 15 है, t भी हो सकता है, z भी हो सकता है, but I know that sigma given है, तो x bar जो है वो भी given है, sample का 2.788, and the sigma value is 0.9. Okay, so step 1 टू टेल टेस्ट है, अभी देख लेते हैं कैसे। राइट H0,
वो पहले से लिखा हुआ है म्यू इज इक्वल टू 3। स्टेप 2 राइट, ये h1 है, यहाँ पे मिस्टेक है, तो यू विल राइट alternate hypothesis which is mu not equal to 3। नॉट इक्वल टू 3 है तो इट मीन्स टू टेल टेस्ट है, टू टेल, तो टू टेल है तो आप फिगर बना लो साथ ही। तो आई विल ड्रॉ दिस फिगर फॉर टू टेल्स। तो z की कर्व बना लेंगे हम। इट विल हेल्प अस टू सी कि हमने हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है। दैट्स व्हाई आई एम प्लॉटिंग इट। तो ये टू टेल है तो इसकी दो टेल्स होंगी, लेफ्ट और राइट बोथ। तो अब जो ये एरिया होगा ना, ये अल्फा बाई 2 होगा और ये भी अल्फा बाई 2 होगा, और रेड रीजन में रिमेंबर हम रिजेक्ट करें, और अंदर जो ये ऑरेंज वाला एरिया है ये 1 माइनस अल्फा। अब दो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, माइनस जी अल्फा बाई 2 प्लस जी अल्फा बाई 2, ठीक है। और अभी से ही मैं जीरो वाली लाइन बना लेता हूँ, ये जीरो है यहाँ पे, और ये हम जी का एक्सेस बना रहे हैं। ओके, द थर्ड स्टेप इज राइट अल्फा significance level, it is 0.05, sorry. All right, the fourth step is calculate the आपने क्रिटिकल पॉइंट्स कैलकुलेट करने ना हो, वी हैव टू, तो कौन सा करें। हमें पता है कि जी टेबल एरिया टू द लेफ्ट देता है, तो मैं माइनस वाला कर लूँगा, तो प्लस वाला खुद ही आ जाएगा, बिकॉज ये सेम है, सिर्फ साइन का डिफरेंस है, तो मैं माइनस वाला सेलेक्ट कर लिया। माइनस जी, I know alpha by 2 will be, alpha by 2 is 0.025, 0.025। अब आपने टेबल में जाके 0.025 देखना है, ये एरिया 0.025, उससे फिर मुझे z की वैल्यू मिल जाएगी, and that z value is -1.96। तो एक तो आ गई -1.96 और प्लस जी अल्फा बाई 2 होगा +1.96, दो आ गई क्रिटिकल वैल्यूज, माइनस और प्लस। फिफ्थ स्टेप है जी सैंपल कैलकुलेट करो। जी सैंपल जो होगा वो होगा एक्स बार माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा और अंडर रूट ऑफ एन। तो एक्स बार जो है हमारे पास वो है 2.78 माइनस म्यू जो है वो दिस इज 3 and sigma we have 0.9 and square root of n is 50. So if we put all this we will get 0.36 and see where this 0.36 lies. उससे पहले कंपेयर करने से पहले यहाँ पे क्रिटिकल वैल्यूज लिख लो ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो। तो ये वाली वैल्यू है 1.96 की, 1.96 की। अब इस ग्राफ एक्सिस पे z 0.36 कहाँ पे होगा, 0.36, राइट। तो ये इंटरवल के बीच में आ रहा है, देखो कॉन्फिडेंस इंटरवल के अंदर आ रहा है। एंड द कंक्लूजन वी विल मेक फ्रॉम दिस इज, ऑरेंज में हम क्या कर रहे हैं, डू नॉट रिजेक्ट, तो डू नॉट रिजेक्ट h0, डोंट रिजेक्ट h0, ठीक, ये वाला कॉन्फिडेंस इंटरवल। सो दिस इज प्रीटी मच इट जी के लिए। लेफ्ट टेल, राइट टेल और टू टेल, ये मैंने एक एक एग्जांपल करवा दी, बाकी सारी ऐसे ही होंगी। नाउ आई विल गो मोर क्विकली फ्रॉम द टी में प्रिसाइजली सेम स्टेप्स हैं, सारे के सारे सेम स्टेप्स हैं, बस करना आपको ये होगा कि यू विल change z with t only, बस ये डिफरेंस है। तो लेट्स सॉल्व सम टी क्वेश्चंस, वही एक एक एग्जांपल करूंगा राइट, लेफ्ट और टू टेल्स की। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी हाउ दिस इज टी टेस्ट।
तो सैंपल वाली लाइन में पढ़ता हूँ ताकि if a random sample of 20, आप खुद if pause the video and understand the equation what it is asking, because I don't have enough time to explain it, that's why I'm just writing numbers. तो n जो है वो 20. now it can be z, it can be t. अब हमें देखना है सिग्मा गिवन है या s गिवन है. तो let's see what I have been given. सैंपल वाली लाइन में पढ़ते हैं. has a mean, okay, mean जो है वो 244 है, which means x bar is 244 milligrams and a standard deviation. तो सैंपल की standard deviation given, which is 24.58. now I am certain that it is a C test because both checks are done, and less than 20 can be Z, can be T, but now S is given, confirm T equals to. चलें स्टार्ट करते हैं स्टेप्स. राइट नल हाइपोथेसिस ढूंढें और लिखें. तो आई एम राइटिंग इट. ओके, सो द नल हाइपोथेसिस की जो स्टेटमेंट है वो ये है. यू कैन रीड इट एंड अंडरस्टैंड. जो H0 है वो म्यू इज इक्वल टू 220. ऑलराइट, व्हाट इज alternate hypothesis? Alternate hypothesis says, यहाँ पे लिखा हुआ alternate, the average sodium content for a single serving of such cereal is greater than 220, right? तो mu is greater than 220. ये alternate हो गया. Third is level of significance. बिफोर गोइंग टू दैट, आपको पता है जब अल्टरनेट हाइपोथेसिस हमें पता चल गया तो टेल देख ले. तो ये राइट टेल है और राइट टेल का पता चल गया. नाउ प्लॉट, मेक टी डिस्ट्रीब्यूशन ताकि there are less and less chance we commit error. So this is T very much looks like Z, except इसकी tails ज़रा wide होती हैं, flatten होती हैं, sorry. So this is T. Right tail है तो इसकी right tail something like this. Critical point इसका T alpha होगा because there is a single tail. और ये यहाँ पे हम रिजेक्ट करेंगे, इसका एरिया अल्फा है. रेड रीजन में आएगा तो रिजेक्ट करेंगे, ऑरेंज में आएगा तो एक्सेप्ट करेंगे. 1 माइनस अल्फा है तो यहाँ पे हाइपोथेसिस जो है डू नॉट रिजेक्ट. ओके, तो हमें क्रिटिकल वैल्यूज फाइंड करनी है. तो स्टेप 3 पे आते हैं प्लॉट बना के. अल्फा level of significance is given here 0.05. single tail है तो critical points will be right tail है तो z alpha is equal to z, sorry, z, I'm writing z, don't make this mistake. This is T alpha is equal to T 0.05. अब it is more easy to check because T का टेबल जो है वो राइट टू के तरफ एरिया देता है. तो आपने T के टेबल में देखना है अल्फा 0.05 कहाँ है. और one more thing you need to know is degree of freedom, right? Nu, which is n minus 1, because n is 20 तो ये 19 हो जाएगा. इसके कॉरस्पॉन्डिंग आपने टेबल से टी की वैल्यू लिख लेनी है एंड दैट टी वैल्यू टर्न्स आउट टू 1.729. तो मैं यहाँ पे इसको इरेज करता हूँ एंड आई विल राइट 1.729 here. Now the fifth step is calculate the sample. Now T sample, sorry, and this will be calculated from the information of sample, which is x bar minus mu. This time I will have s, बाकी सब कुछ सेम रहेगा, square root of n. I will put all these values
and the answer I get is 4.38. 4.38. तो कैन यू गैस के 4.38 कहाँ होगा? टी एक्सिस पे ये 0 है, ये 1 है, तो 4.38 विल बी समवेयर हियर, राइट? 4.3। तो अब आप बताएं कि जो सैंपल से टी आया है वो कहाँ, किस रीजन में है? यू कैन सी रेड रीजन में है, तो हम कहेंगे रिजेक्ट। ओके, सो व्हाट राइट टेल के बाद लेफ्ट टेल में भी सेम प्रोसेस है। आई होप सो यू विल बी एबल टू सॉल्व दिस। पॉज द वीडियो, ट्राई टू सॉल्व इट। तो मैं करता हूँ यहाँ से सॉल्व। तो मैं तो सैंपल वाली लाइन से यूजली स्टार्ट करता हूँ रीडिंग। इफ अ रैंडम सैंपल ऑफ सो दैट आई नो विच टाइप ऑफ क्वेश्चन इज दिस, एंड इस केस में भी 20 है, सो इट कैन आइदर बी जी और टी। अब डिसाइड कौन करेगा कि स्टैंडर्ड डेविएशन किसकी गिवन है? तो लेट्स सी। एवरेज गिवन है सैंपल की 33.1, एक्स बार 33.1 विद स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 4.3। तो सैंपल ही की स्टैंडर्ड डेविएशन का। तो नाउ आई एम कंफर्म दैट दिस इज अ टी क्वेश्चन। लेट्स डू आवर ड्रिल। सबसे पहले h0 लिख लो। h0 is equality, mu is equal to 35, and then you will write alternate hypothesis. Alternate hypothesis says less than 35. Now you know कि less than greater than है तो कौन सी टेल बनेगी? लेफ्ट टेल। तो ये less than है तो लेफ्ट टेल बनेगी। टेल डिसाइड होगी तो प्लॉट दिस फिगर सो दैट वी नो के हमने रिजेक्ट करना है, एक्सेप्ट करना है। सो प्लॉट दिस टी इज मोर फ्लैटर ऑन टेल्स, so something like this. Okay, so this axis is t, यहाँ पे 0 भी बना लें साथ ही। Because this is a left tail, I will only have left region. मैंने ज़्यादा एरिया बना दिया, but it doesn't matter। तो लेफ्ट पे ये क्रिटिकल पॉइंट मुझे चाहिए माइनस टी अल्फा। अल्फा होगा ये रीजन, और इस रीजन में अगर सैंपल की टी वैल्यू आई तो हम रिजेक्ट करते हैं 0 को। ओके, so step 3 is just to remind you that ये ऑरेंज वाला एरिया 1 कॉन्फिडेंस इंटरवल का। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस देख लें कहाँ पे गिवन है। सिग्निफिकेंस लेवल अल्फा इज 0.05। then what I have, I need to find critical values because 0 से नीचे है माइनस टी है, तो I need to find माइनस टी अल्फा। I need to find minus t alpha. So the value will be minus t 0.05, and remember t का टेबल एरिया टू द राइट देता है, हमें ये लेफ्ट का एरिया पता है, तो ये कैसे निकालें? द ट्रिक हियर इज वेरी सिंपल। लेफ्ट टेल टेस्ट में हमेशा ये कर सकते हो आप कि यहाँ पे जो वैल्यू होगी प्लस टी अल्फा, और उसका जो एरिया होगा अल्फा, ये ब्लैक वाली वैल्यू और ये रेड वाली वैल्यू सेम हो बिकॉज ऑफ सिमेट्री प्रॉपर्टी। तो अगर आप ये प्लस टी अल्फा ढूंढ लो तो ये माइनस टी अल्फा मिल जाएगा। इन अदर वर्ड्स अल्फा जो है वो 0.05 देखो टी के टेबल में, ऑल्दो ये एरिया टू द राइट देता है, तो यहाँ से हम एरिया टू द राइट देख के टी निकाल लेंगे ना। तो ये टी सेम इस टी के इक्वल है बिकॉज सिमेट्री की वजह से ये एरिया रेड वाला सेम है। तो करना ये अब आपने जाके टी का टेबल खोलना है, अल्फा 0.05 देखना, और डिग्री ऑफ फ्रीडम, यू नीड डिग्री ऑफ फ्रीडम टू सी दैट which will be 19, 20 minus 1, and the t value you get will be minus 1.98, sorry, minus 1.729,
So fifth step is calculate t from sample, which says like x bar minus mu divided by s square root of n. तो ये सारी वैल्यूज पुट करो 33.1, म्यू जो है वो 35 है, एस जो है वो 4.3 है और n की वैल्यू जो है 20. So by putting all these values in, I get minus 1.98. तो मैं critical values पहले लिख लेता हूँ यहाँ पे. The critical value we found it was minus 1.72. Now the step 6 is compare sample value and critical value. Minus 1.98 तो t के एक्सिस पे कहाँ पे आएगा? ये minus 1.7 है, इसके लेफ्ट पे होगा minus 1.98. तो अब आप देखें कि किस रीजन में आ रहा है टी सैंपल. क्रिटिकल में आ रहा है तो रिजेक्ट करेंगे, रिजेक्ट. So this is the answer. Now the final question of this tutorial is two-tailed t-test. सेम जो अभी तक हम करते आए हैं, सेम वही चीज़ है. अब आपने सैंपल से स्टार्ट कर देना है. N25 है. Pause the video, try to understand the question. I am not explaining the statement because if I do, the tutorial will be too long. तो statements I suppose आप video pause करके खुद समझते होंगे, and if you don't understand, you can ask questions. And at least for this question, this statement is quite straightforward. Okay. N25 है. So ये बहुत सारे 25 डेटा पॉइंट्स दिए हुए हैं. यहाँ से आप x बार निकाल सकते हो. You can calculate. So let me write maybe. And here 25 x bar. इन 25 को ऐड करके 25 से डिवाइड करना है. The answer will be 33.5. And then यहाँ से आप वो s निकाल लो. स्टैंडर्ड डेविएशन जब आप निकालोगे इस डेटा पॉइंट से वो 4.3 होगी. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट द ड्रिल्स. क्या आप नल हाइपोथेसिस लिखो. इसमें बहुत से स्ट्रेट फॉरवर्ड है बिकॉज खुद ही स्टेट किया हुआ है नल हाइपोथेसिस. सो लेट मी स्टिक विद माय कलर्स. At 0, mu is equal to 98.6. And the second one we write alternate mu not equal to 98.6. तो not equal है टू टेल हो गया. टू टेल है तो प्लॉट कर लो इसको. जी कर्व बना लो. जीरो वाली कर्व भी बना लो. ये जीरो हो गया. टू टेल आई विल हैव टू टेल ऑन लेफ्ट वन राइट. ये अगर दो टेल्स हैं तो दो होंगी क्रिटिकल वैल्यूज, और इस दफा क्रिटिकल वैल्यूज अल्फा बाय 2 के साथ होंगी. अल्फा बाय 2. ओके, फेयर इनफ. अगर आप टी अल्फा बाय 2 निकालना है. थर्ड पॉइंट इज लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस लिख लो, वो 0.05. फोर्थ ये है कि क्रिटिकल पॉइंट निकालना है अपने. तो इसमें कौन सा, ये माइनस वाला है, ये प्लस वाला है. तो प्लस वाला निकाल लें, माइनस वाला खुद ही आ जाएगा. तो ये अल्फा बाय 2 है तो ये एरिया 0.025 होगा. तो टी 0.025. मैं प्लस वाला निकाल लेता हूँ. क्यों प्लस वाला? क्योंकि ये एरिया 2 राइट है. तो मैं ये 0.025 देखूंगा. टी के टेबल से
न्यू 20 देखूंगा और t की वैल्यू लिख लूंगा, and that t value turns out to be, let me see if I have written somewhere. Yes, I do. 2.064. And this is plus, right? So we will have two t values, plus minus t. So I have two t values, t alpha by 2. Let me write like this. T 0.025 is equal to plus minus 2.064, because those values are right. And now sample, so calculate karo t sample x bar minus mu divided by s square root of n, right? तो ये x बार हमने निकाला हुआ है, s भी निकाला हुआ है, n भी निकाला हुआ है, सब कुछ पुट करें यहाँ पे, the answer turns out to be minus 3.48. तो comparison से पहले I will write, let me write this critical values I did calculate. वो हैं minus 2.06 और प्लस 2.064 भी लिख सकते हैं, लिखना चाहें. अब t एक्सिस पे ये t एक्सिस है, ये जो सैंपल है ये कहाँ पे, -3.48, -2 है तो ये -3.48. तो नाउ यू कैन सी के जो सैंपल की वैल्यू कैलकुलेट की वो रेड रीजन में है, तो हम क्या करेंगे, रिजेक्ट करेंगे, रिजेक्ट. So this is the answer. This is pretty much it. You can see the t tests are quite same and very straightforward. As I said, try to solve more challenging questions, and if you have problems, do share with me.